Hello everyone, I'm Rakhi and in this video series we will learn some simple tricks to remember elements, their symbols and their respective positions in periodic table. This is our modern periodic table where elements are placed in various blocks, say S block, P block, D block and F block, based on their similar electronic configuration and similar chemical properties. Further sequencing of elements is done on the atomic number. In the periodic table, these vertical columns you are seeing over here are called as groups. Earlier, these groups were named as 1A, 2A, 3B, 4B and so on, where B was used as suffix for D block and F block elements and A was used for S block and P block elements. But later, IUPAC has named the groups serially from group 1 to group 18, left to right. That means leftmost group is group 1 and the rightmost group is group 18. If we look at horizontal rows, they are called as periods. So here if you see in period number 1, this is period number 1, there are two elements, hydrogen and helium. In period number 2, there are 8 elements each: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Same is the case with period number 3. In this also we are having 8 elements. So this is period number 1, this is period number 2, this is period number 3. In period number 4 there are 18 elements. This is period number 4. Okay. So 8 are as usual in S and P block and 10 elements in D block, here shown in yellow. D block elements we will cover separately in mnemonics part 2. Okay, so that was brief about periodic table from mnemonics point of view. Now we will have a look at various groups one by one. Now coming to group 1. Group 1 elements में आते हैं hydrogen and alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. नीचे इनके symbols भी दिए हैं. हाइड्रोजन के लिए H, लिथियम के लिए Li, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, रुबिडियम के लिए Rb, सीजियम के लिए Cs, फ्रेंसियम के लिए Fr. आपको जो फ्रेज याद रखना है इसके लिए वो है हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री. Halina is a street vendor who prepares very tasty and inexpensive rabdi. Now coming to group 2. So group 2 elements में आते हैं beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Okay, इनके symbols है Be for beryllium, Mg for magnesium, Ca for calcium, Sr for strontium, Ba for barium, Ra for radium. आपको जो फ्रेज याद रखना है वो है बेटा मांगे कार सुनकर बाप रोए. Okay, so look at this picture, son dreaming of the car while poor father is crying at his demand. Okay, so now we'll come to group 13. So group 13 में जो elements हैं वो हैं boron, aluminium, gallium, indium, thallium. B for boron, Al for aluminium, Ga for gallium, In for indium, Tl for thallium. आपको जो फ्रेज इनके लिए याद रखना है वो है बैंगन, आलू, गाजर in थैली. See, now I'm going to put them in थैली one by one. Here goes बैंगन, here goes आलू and here goes gajar. So now coming to group 14. Group 14 elements में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. इनके सिंबल्स हैं C for carbon, Si for silicon, Ge for germanium, Sn for tin, Pb for lead. यहाँ आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है. टिन का सिंबल Sn होगा एंड लेड का Pb होगा, जबकि इनके नाम में कहीं भी Sn और Pb नहीं आते हैं. इस ग्रुप के लिए जो आपको फ्रेज याद रखना है वो है chemistry sir gives son की problem. So you over here are seeing that this chemistry teacher gives very idiotic problem to his students. You can see the results are very explosive thereof. Don't worry, I'm not gonna give you such problems. You are very much in safe hands. Okay.
So now coming to group 15. ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके सिंबल्स नीचे दिए हैं। नाइट्रोजन का सिंबल है N, फास्फोरस का सिंबल है P, आर्सेनिक का सिंबल है AS, एंटीमनी का सिंबल है SB, बिस्मथ का सिंबल है BI। यहाँ आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, आर्सेनिक का सिंबल AS है ना कि AR। AR आर्गन का है जो ग्रुप 18 का एलिमेंट है। और दूसरी बात, एंटीमनी का जो सिंबल है वो SB होगा, जबकि इसके नाम में कहीं भी SB नहीं आता। सो फनी नो। इस ग्रुप के लिए आपको फ्रेज याद रखना है, वो है नाना पाटेकर अग्नि साक्षी से बना बिलियनियर। See, Nana Patekar is a legendary actor of Bollywood and he becomes pretty famous after his movie Agni Sakshi. Later on, he went on to become billionaire. Okay, so now moving on to group 16. Group 16 के जो elements हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इनके सिंबल्स हैं O for oxygen, S for sulfur, Se for celerium, Te for tellurium, Po for polonium। ओके, और इस ग्रुप के लिए जो आपको फ्रेज याद रखना है वो है ओ सचिन से टीपो। इन दिस पिक Virat Kohli is asking Rahul Dravid to improve his square drive and Dravid says, look, learn and copy from Sachin। Okay, so now moving on to group 17. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इनके सिंबल्स हैं, फ्लोरीन का सिंबल है F, क्लोरीन का सिंबल है Cl, ब्रोमीन का सिंबल है Br, आयोडीन का सिंबल है I एंड एस्टेटिन का सिंबल है AT। यहाँ आपको एक बात रखनी है याद कि एस्टेटिन का जो सिंबल है वो AT है ना कि AS, which is arsenic and a group 15 element। ओके, आयोडीन का सिंबल I है। इंडियन हमने जो पढ़ा था ग्रुप 13 में उसका सिंबल था IN। सो डोंट गेट कंफ्यूज। इस ग्रुप के लिए जो आपको फ्रेज याद रखनी है वो है foreigner celebrities brought Indian attire। In this pic, what you are seeing that famous Hollywood celebrities have brought Indian attire in their performances. Angelina Jolie, Julia Roberts, Britney Spears, Shakira। Okay, and one more thing I want to tell you is that one of my student has just suggested a shorter phrase for this group. Okay, that phrase is face CBI attack। Okay, so face CBI attack. It is clear to all of you? Okay, now we'll move on to group 18. Group 18 elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। Okay, helium का सिंबल है He, neon का सिंबल है Ne, argon का सिंबल है Ar, krypton का सिंबल है Kr, xenon का सिंबल है Xe and radon का सिंबल है Rn। ओके, सो इस ग्रुप के लिए जो आपको फ्रेज याद रखना है वो है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। यस, so I hope this video would help you to remember elements of S and P blocks, their symbols and their respective positions in periodic table. If you like the video, please like and subscribe our channel. If you have any doubt in this regard, please write it down in the comment box below. In the next video, mnemonics part 2, we would take up D block elements. Till then, take care and goodbye.